देवेश जी नमस्कार। 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 साहित्य अकादमी द्वारा विश्व कविता दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस ऑनलाइन बहुभाषी पाठ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं में साहित्य के उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में अकादमी द्वारा साल भर में लगभग 600 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इधर जब महामारी की स्थिति थी तब अकादमी ने ऑनलाइन कार्यक्रमों की शुरुआत की और बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने कार्यक्रमों के आयोजन किए विभिन्न भाषाओं में, और कई दिनों के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिनमें 60-70 लेखकों की भागीदारी इस तरह से रही। जैसे पिछले साल हम लोगों ने पिछले साल आदिवासी भाषाओं के लेखकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 75 भाषाओं के लेखकों को हमने शामिल किया था। और अभी भी लगातार हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, फिजिकली भी किया जा रहा है और ऑनलाइन भी किया जा रहा है। ये भी कभी कभी कोशिश रहती है कि जो कार्यक्रम फिजिकली आयोजित हो रहे हैं उनका प्रसारण यूट्यूब पर किया जाए। जैसे आज ही दिल्ली में हमारे दिल्ली कार्यालय के सभागार में जो एक 24 भाषाओं के कवियों को आमंत्रित करके विश्व कविता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, उसका सुबह 11 बजे से अभी तक प्रसारण चल रहा था। और ये क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के द्वारा यह एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 12 भाषाओं के कवियों को हमने आमंत्रित किया है। हमारे बीच बांग्ला भाषा के प्रतिष्ठित कवि और पश्चिम बंग कविता अकादमी के अध्यक्ष सुबोध सरकार जी मौजूद हैं, जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो श्रोता समूह हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, उनसे अनुरोध होगा कि कार्यक्रम के लिंक को आप सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। आरंभ में मैं अनुरोध करूंगा श्री सुबोध सरकार जी से कि 2-1 शब्द बोलने के लिए, उसके बाद हम कविता पाठ की शुरुआत करेंगे। श्री सुबोध सरकार जी। नमस्कार। Good evening to all of you. Good evening. Good evening, sir. I first thank the Academy for organizing this beautiful evening of poetry, written in different languages of India, especially in this part of the country. I'm really happy and I feel very good to be here with my poet friends who will be speaking in different languages, who will be reading their poems in different languages. It's a great opportunity for all of us to be able to meet on this wonderful day for poetry. Today, you go anywhere you like. You go any part of the world. It is the World Poetry Day. You go to America, it is World Poetry Day. You go to Brazil, it's World Poetry Day. You go to Manipur, you go to Jharkhand, or you come back to Kolkata, it's World Poetry Day everywhere. So anyway, I celebrate personally and also publicly to say that the poetry of the art never dies. The poetry will remain with us as long as we are here on earth. So that way, I must thank the Academy
for organizing this beautiful evening of. So as Deveshji, thank you Deveshji very much for telling me that I should speak a few words and then I should read my poems. So I choose to read two of my poems, and one poem I would like to read in Bangla and then followed by translation, and the other poem only translation. And my translations are in English translation. The first one that I'm going to read is the one from my very recently published book. In Bengali, it is called Ekti Chumbon, Ekti Dynamite. One Kiss, One Dynamite. It's a love poem. This book is a book of love poems. So I'm reading out this poem in translation first, and then I will follow with the original. One kiss, one dynamite. No happiness. Neither I want peace. I want love hot. I am not to live 80 years. Let's bring in. With it in my hand, I will not live 80 years. Why didn't I love you before? Happiness is the smile of a snail. Peace is the yawn of a dinosaur. If the police knocks on my door, ready to walk into a police station, in one pot is happiness, in another, my tears. Love robbed, I have been a robber. I want love hot. Is there anybody to watch me? Without a second's dilemma, my lip slows down on your lip. Sundown, but the sun rises from down. No happiness, no peace. With you pestered on the wall, I tore down the buttons for a kiss. One kiss is one dynamite. I stand on the top of the flyover to sing a song, and I want the spring here tonight. Now the original in Bengali. Ekti chumbon, ekti dynamite. China shuk, China ami shanti. আমার চায় সর্বনাশ, তোমার ভালোবাসা। 80 বছর বাঁচতে আমি আসিনি। বসন্তকে ডাকো, বসন্তকে আমার হাতে চাই। কেন যে আগে তোমাকে ভালোবাসিনি। সুখ আসলে হিরোশিমার হাসি, শান্তি মানে কচ্ছপের হায়। এক বাটিতে সুখ তোমার, এক বাটিতে অশ্রু। ভালোবাসায় আমি স্নেহের দস্যু। আমার চায় সর্বনাশ, দেরি না করে তোমার চোখে নামতে থাকে আমার চোখ। সূর্য যদি ওঠে, মরাকে বাঁচতে চায় তোমার ভেজা ঠোঁটে। সুখ আসলে হিরোশিমার হাসি, শান্তি মানে কচ্ছপের হায়। চাই না সুখ, চাই না আমি শান্তি। দেয়ালে পিষে ধরি তোমার মুকুট মণিপুর। একটি চুমু, একটি ডিনামাইট, বাকিটা গুড নাইট। ফ্লাইওভারে দুহাত মেলে দাঁড়িয়ে গান গায়, হাতে আমার বসন্তকে চায়। The second poem, only the translation. I'm not reading out the original. And this poem I wrote in 2006. The poem is called, in Bengali it is called Manipurer Ma. Only the first line I would like to read out in Bengali. Nagno uthe daralo amar Manipurer ma.
As you are aware of the fact that in 2006, when the mothers came out and they stood naked as a protest against the Indian army in Imphal, in front of the Assam Rifles headquarters. And that became a headline all over the world. That night I felt, very painfully I realized that even my mother was also standing with those 12 mothers. Everybody's mother was standing with them. So kudos to the mothers of Manipur. My respect to the mothers of Manipur. And that night I wrote this poem. Mothers of Manipur. Stood up my naked mother of Manipur. We got eyes from the eyes of this mother. Got a tongue, got the tunes. Sa, re, ga, ma. Stood up my naked mother of Manipur. Army and police can do whatever they wish. Curfew on streets. Charminar burns. No one has any word to say. They are not supposed to. Stood up my naked mother of Manipur. Army jeep moves below the sky. The girl tosses in the army jeep, crying, Sari jahan se acha. She is unbuttoned in the army jeep. Even if the girl returns home, even if she dies under the sky, the police erased her name. Where does she live? In a village outside Imphal. It happens day in and day out. Somewhere a girl is lying abused. Somewhere her sister is not found. Only their skirts flutter from the trees. But this July has crossed all limits. Mothers of Manipur stood up the naked breast milk givers. Can't you see how many veins are there in your mother's breast? How do you feel when you see your mother being naked? The moment Assam Rifles the shot gate, where I was in that mother's womb, from where gushed out hot Ganga, mothers of Manipur redefined my mother with a new name, where mothers walk naked in a procession. Commanders, what you were doing then? Do you still think your mother is sacred? She is burning. She is burning. My strongest mother is burning within all mothers of Manipur. Thank you. Thank you very much, Subodh Da. मित्रों, Thank you, Devesh. सुबोध दा हमारे साथ बने रहेंगे और सबकी कविताएं सुनेंगे और अंत में मैं उन्हें खुद फिर आमंत्रित करूंगा 2-1 शब्द बोलने के लिए जो कविताएं पढ़ी जाएंगी उसको ध्यान में रख करके। आप सभी जानते हैं कि सुबोध दा की लगभग 40 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हैं और आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं असमिया के प्रतिष्ठित कवि, लेखक एवं संपादक श्री सुरेश रंजन गोदुका जी को। आपका एक कविता संकलन प्रकाशित है। आप जीवन नामक मासिक पत्रिका के संपादक रहे तथा जीवन काइट एवं रिवर फेस्टिवल के संस्थापक हैं। अभी आप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स गुवाहाटी केंद्र के निदेशक हैं। आपको इंडिया टुडे के इंडियाज 35 यूथ अचीवर्स में शामिल किया गया था उसके एक सर्वे के हिसाब से। तो आमंत्रित हैं सुरेश रंजन गोदुका जी अपनी असमिया कविता के साथ। नमस्कार, सभी को वर्ल्ड पोएट्री डे की शुभकामनाएं। मेरी कविता असमिया में है, तो पहले मैं इसका हिंदी अनुवाद ये पढ़ता हूँ और फिर अपनी ओरिजिनल कविता पढ़ने की कोशिश करूँगा। सबको धन्यवाद यहाँ देखने के लिए और सुनने के लिए। कविता का शीर्षक है जनता कर्फ्यू। नकाब हटाकर
खुद को अंधेरे में लपेटकर फिर से नकाब लगाने के लिए मैं सुबह का इंतजार कर रहा था। बहुत सारे पक्षी चहक रहे थे। नींद में ही मैं पहुंच गया शायद, पक्षी के पंख पहनकर गांव के आंगन तक। ये सपना नहीं था, सपने की तरह था। पक्षी बाहर निकल रहे थे, हम बाहर नहीं गए। मशीनें इतनी खामोश कभी नहीं थी, पक्षी इतने मुखर कभी नहीं थे। उस सुबह की रोशनी ने बंदी कौन है और मुक्ति क्या है सब कुछ भ्रमित कर दिया। खुद बंदी बनकर क्या हमने पक्षी को मुक्ति दे दी? कहाँ थे इतने पक्षी इतने साल, आकाश में या जंगल में? उस स्मृतिग्रस्त सुबह जब मैं जीवन के लिए नई प्रस्तावना लिखने को अस्थिर हो रहा था, पक्षियों ने एक साथ पुकारा, तुम लोगों ने सुगंध की तलाश में बगीचों को नष्ट कर दिया। खोने के बाद तुम्हें खोने के पहले की दुनिया चाहिए। तुम्हारे लिए क्या हमें पिंजरे में कैद होना पड़ेगा? ये बस मैं पूछने ही वाला था। पक्षी उड़ गए, उड़ते उड़ते कह गए, हम तुम्हें कैद नहीं करना चाहते, हमें अपनी मुक्ति चाहिए। हमारी मुक्ति में ही है तुम्हारी भी मुक्ति। धन्यवाद। ये बहुत लंबी कविता है, तो मैं इसकी 4 लाइन ही सिर्फ अपनी अपनी भाषा में पढ़ता हूँ, क्योंकि सबको समझ में आ गई है कविता। জনতা কারফিউ মুখা হুলকাই আন্ধাৰেৰে নিজক মেৰিয়াই আকৌ মুখা পিন্ধিবলৈ পুৱাৰ অপেক্ষাত আছিলো। ইমান চৰাইৰ কলৰৱ টোপনিতে পালোহি নেকি চৰাইৰ ডেউকা পিন্ধি গাঁৱৰ পদূলি। धन्यवाद। अब मैं दूसरी कविता पढ़ता हूँ। ये इतनी लंबी कविता नहीं है, छोटी कविता है। इसका भी पहले हिंदी पढ़ता हूँ, बाद में असमिया पढ़ूंगा। इसका शीर्षक है राजनीतिक। उनके अपने रंग उन्होंने खुद ही घोषणा कर ली थी, असली नहीं थे घोषित रंगों के रंग। वे मांग कर रहे थे अपने अपने रंगों की, वो मांग कर रहे थे अपने अपने रंगों की, नहीं तो कैसे लगाएंगे, कैसे बदलेंगे रंग। रंगों का शोर भी कुछ कम नहीं था। कई रंग किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। कोई भी रंग किसी का रंग बनने को भी तैयार नहीं था। मैं चुपचाप देख रहा था। सबके चेहरे पर मैं लगा आया सारे रंग। रंग के विस्फोट में वे राख में बदल गए। इस प्रकार सारे रंग स्वतंत्र हो गए। धन्यवाद। इसका असमिया में पढ़ता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। राजनৈতিক। धन्यवाद। নিজৰ নিজৰ ৰং নিজেই ঘোষণা কৰি লৈছিল, আসল নাছিল ঘোষিত ৰঙৰ ৰং। দাবী কৰিছিল দিয়া হোক নিজা নিজা ৰং, নহলেনো কেনেকৈ হানিম কেনেকৈ হলাম ৰং। ৰঙৰো কোলাহল কম নাছিল। ৰং কাৰো অধীন নহয়, কোনো ৰং সাজু নহয় কাৰো ৰং হবলৈ। মনে মনে চাই আছিলো, আটাইৰে মুখত সানি থৈ আহিলো আটাইবোৰ ৰং। ৰঙৰ বিস্ফোৰণত সিহঁত ছাই হৈছিল, এনেকৈয়ে ৰংবোৰ স্বাধীন হৈছিল। धन्यवाद। कितना समय होगा? मैं और कविता पढ़ सकता हूँ? जी सुनाइए, एक और कविता सुनाइए। हाँ जरूर। ये मेरी है तीसरी कविता, जिसका हिंदी में मैं पढ़ता हूँ पहले। स्वाधीनता। अर्थों ने एक दिन बगावत की घोषणा की। अर्थों ने एक दिन बगावत की घोषणा की और शब्द के कब्जे से खुद को किया रिहा। ये हिंदी में इसका दिनकर कुमार जी ने अनुवाद किया है। अर्थों ने एक दिन बगावत की घोषणा की और शब्द के कब्जे से खुद को किया रिहा। शब्दों ने इतने दिनों से अर्थों को छिपा कर रखा था। हमारी जिंदगी और इस धरती पर किया था उलटफेर। शब्द अब हो जाएंगे अर्थहीन, यही है उनकी सजा।
वे कैद रहे शब्दकोश के कारागार में, शब्द से स्वाधीन हुए अर्थ अब से करेंगे हर जगह राज। सभी एक स्वर में कहेंगे शब्द जिंदाबाद, अब से हमारी जिंदगी और ये धरती बन जाएगी सही अर्थ में अर्थपूर्ण। अब से हमारी जिंदगी और ये धरती बन जाएगी सही अर्थ में अर्थपूर्ण। लेकिन ये क्या, शब्द के पोशाक के बगैर अर्थ तो हो गए नंगे। चारों ओर भगदड़ मच गई, पूरी धरती हो गई नग्न। धन्यवाद। इसका मैं असलन पढ़ता हूँ। स्वाधीनता। অৰ্থবোৰে এদিন বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিলে আৰু শব্দৰ কবলৰ পৰা নিজকে কৰিলে মুক্ত। শব্দবোৰে ইমান দিনে অৰ্থবোৰক লুকুৱাই ৰাখিছিল, আমাৰ জীৱনত আৰু এই পৃথিৱীত খেলিমেলি লগাইছিল। শব্দবোৰ এতিয়াৰ পৰা হৈ পৰিব অৰ্থহীন। এয়াই সিহঁতৰ শাস্তি, সিহঁত বন্দী হৈ থাকক অভিধানৰ কাৰাগাৰত। শব্দৰ পৰা স্বাধীন হোৱা অৰ্থই এতিয়া কৰিব সকলোতে ৰাজত্ব। সকলোৱে সমস্বৰে ক'ব অৰ্থ জিন্দাবাদ। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ জীৱন আৰু এই পৃথিৱী হৈ পৰিব সঁচা অৰ্থত অৰ্থপূৰ্ণ। কিন্তু ই কি, শব্দৰ পোছাক নোহোৱা অৰ্থবোৰ দেখোন হৈ পৰিল উলংগ। চাৰিওপিনে হোৱা দোৱা লাগিল, গোটেই পৃথিৱীখনেই হৈ পৰিল নগ্ন। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश रंजन गोदुका जी को। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिष्ठित बोडो कवि, कथाकार और संपादक श्री अरविंदो उजीर जी को। आपके कुल 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 20 से अधिक स्मारिकाओं का आपने संपादन किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा रंगसार अवार्ड से सम्मानित हैं आप। इसके अलावा अन्य अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। श्री अरविंदो उजीर जी अपनी कविताओं के साथ। सर अनम्यूट कर लीजिए पहले। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, आप सुनाइए। Very good evening to all of you. At the very beginning, I would like to convey my best wishes to all of you on the occasion of World Poetry Day. As I belong to Bodo community, I would like to read one of my Bodo poems, and thereafter I would come to my English translation. Now, first I would like to come to one of my English translations, and thereafter I would come to the Bodo original poem. My first poem is Things Are Missing. In a city, towers are missing, trees are missing, birds are missing, people are missing too. In the countryside, hotmans are missing, roads are missing, people are missing too. In the sky, the sun is missing, the moon is missing, stars are missing too. In the dark cover of smoke, minds are missing, clocks are missing, and life is missing too. Now this is the English translation, and hereafter I would like to come to my original Bodo poem. Muafra Gemalangden. Nöger gongsenifrai goजौ tawarfra gemalangden. Dongfangfra gemalangden. Daufra gemalangden. Mansiफ्राबो gemalangनो हमदों. Kami gongsenifrai न'फ्रा गोमालांदों. लामाफ्रा गोमालांदों. मानसिफ्राबो गोमालांनो हमदों. अख्रांनिफ्राय साना गोमालांदों. अखाफोरा गोमालांदों. हाथरखिफ्राबो गैया जालांनो हमदों. उखुन्दैनि गोसोम थोरफो साग्लोबनायनि सिङाव मानसिनि गोसोफ्रा गोमालांदों. रिंगाफ्रा गोमालांदों आरो
Gemalang Homdeng Ziu. And hereafter, I would like to come to my second poem, and I would read only the English translation. Sailing through the purple sky, the colossal hermit hill, quiet in contemplation, half open are his eyes under the misty veil. Removing the veil, he stretches his hands towards the heaven with a great yawn. A ship is sailing through the purple sky. Last night, there was a flood in the plain as the moon opened all her spillways. But the presence of the waves is missing now. They might be lost somewhere in the cold body of night. A circle of fire is dressing up over the hermit's head, and something is reddening inside my chest. Now, another one. The title of the poem is Commodity. Everything is a commodity here and now. Your eyes, your smile, your teeth, your muscles, all are commodities that you sell for price. To the product launchers, they are the owners of your limbs. They sell and resell them to consumers for their profit. The shaking of your limbs to deceive the consumers is not at your will. You shake only the will of their owners. You are a commodity between your limbs for no good or bad reasons. Your light feet or the heavy hands, all are commodities. Your dream is not a dream. Your reality is a dream, and your dream is a consumed reality. Your flesh, blood, hair, skin, and the bones, kidneys, heart, lungs, bile, and the belly, all are commodities. Your tongue is a commodity. The soft tissues in your skull, all are commodities which are sold or used for their owner's benefit. Now, your ballot is a commodity. The center of your being is a commodity. You are a mobile commodity. Next one. The title of the poem is Birds. Birds have no horizon. The planet is their home, and the eternity their limit. Some birds explore the sky, some remain at home to make peace. Some live on their prey, and some live on kills. Some live in heaven and never come down to earth. Some birds want to keep the globe under their claws and aspire to become the Lord of the universe. Some birds want to change the color of this planet only by changing the color of their wings. Some are humble and innocent. They have nothing to contradict. There are some that make this globe unfit for living. Despite that, some are there that beautify the world and symbolize peace by their presence and make this world worth living. And for today, that's enough. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच अरविंदो उजिर जी। और मित्रों, हम अब अगले कवि की ओर चलते हैं। हमारे बीच हैं
अंग्रेजी और तमिल भाषा के प्रतिष्ठित कवि, कथाकार और लेखक श्री एस संपत कुमार जी। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपके उपन्यास का इतालवी और बांग्ला भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है, जिनमें एक नाम मैं लेना चाहूंगा, इतालवी सरकार से नाइटहुड सम्मान। तो आमंत्रित है श्री एस संपत कुमार जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार। एक तो पहला जो है, I will read a poem on Jallianwala Bagh, which is a very important milestone in our history. It's in English. The armored vehicles roll in as the people gather in peaceful prayers. The fiery eyes of the general spew venom as he gauges with a vengeance. Vermin, he murmurs at the thousands of simple folks. Fire, he shouts, as his menacing troops raise their rifles. The first bullet pierces the soft skull of a child still sucking milk hungrily from his mother's voluptuous breast. The lead drills swiftly through her heart too, as the blood-splattered mother promptly dies, worrying about her child's safety. Mayhem it is, as people scramble helter-skelter. The sound of wail drowns in the hail of bullets from all around. The well seems deep and only respite as hundreds jump in to dissolve in the dark, deadly abyss, never to see the light ever. 100 years have passed from the grotesque crime committed by men against men, women against women and innocent children, and the empire regrets today at the aberration but cannot offer an apology to a nation wounded the deepest. I step in slowly at the Jallianwala Bagh to see the bullet-ridden walls wailing still, the eerie depths of the gluttonous well scaring me as I look below. The perpetrators of the crime may not be ashamed ever. Humanity cries at the crime still. Thank you. The second poem that I am going to read is an ode to Ravindranath. The bard sits quietly, immersed in deep thoughts. The autumn leaves jostle to tear away from their umbilical cords. From the tall teak trees around, their trunks reddened by the earth. The trees seem to blush, like new mothers whose cheeks glow with pride. The stagnant thoughts are snapped, the fragrance revealing her arrival. It's special of a kind, unlike from any known flower. He hears the jingles of her anklets, revealing her sneaky steps. The warmth of her arms around his neck seem more graceful than any garland. Her cheeks too red, like the beautiful teak trees around. Happily he closes his eyes, transcending into different world, distant, ethereal, yet near and real. Words flow in his mind and verses fill volumes. In the abode of peace, the poet is reborn. My last poem I will do is on International Poetry Day. Today is International Poetry Day. I nudge myself to write a few lines, truly and factually, revealing my turmoil, the war within my mind, my inability to recognize the bad from the good, the virtuous from the evil. It is long, I sit in silence, staring at the paper blank, as my mind, blank as my mind. I fail to write poetry simply by filling with words, devoid of any spirit, much like a body without a soul. Today is International Poetry Day. I guess I must not succumb, but again try.
as I dip my pen into the ink pot and effortlessly breathe characters on the romancing paper, like I breathe life yet again into the soul. Thank you. Is there any more time, Devendra? Yeah. Now may I request Shri Krishna Mohan Jha ji. Krishna Mohan Jha ji हिंदी और मैथिली भाषाओं के प्रतिष्ठित कवि हैं। विभिन्न भाषाओं में आपकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं और चर्चित रहे हैं। 3 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। कन्हैया स्मृति सम्मान, हेमंत स्मृति सम्मान, कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है। संप्रति आप असम विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। श्री कृष्ण मोहन झा जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार। विश्व कविता दिवस की सारे सहयात्री कवियों को और कविता प्रेमियों को बहुत शुभकामनाएं। पहली कविता वसंत। एक माहिर शिकारी की तरह आखेट पर निकला है वसंत, पर उसके आने की खबर हर तरफ फैल चुकी है। लाल, पीले, नारंगी, नीले रंगों के जल में झिलमिला रहे हैं दृश्य। अदृश्य तक उसके पदचाप से अनुरणित है और मरहम जैसी एक उदासी कनपटियों को छूती हुई पीछे बहती जा रही है। जो जीवित हैं वे सावधान रहने के बजाय उसका शिकार बनकर बौरा गए हैं। उनके चेहरे पराजय की आभा से हैं दीप्त, और जो जा चुके हैं उनकी स्मृतियों के फूल पर वह तितलियों की तरह आकर बैठ गया है। पेड़ों और झाड़ियों के नीचे शिशिर की छायाएं जो लुढ़की रहीं, बेबस आंखें मीचे आहलाद से अब डैने अपने खोल रही हैं। गुनगुने स्पर्श से अनुप्राणित खुद को तौल रही हैं। यह हवा दोपहर की जब करवट बदलेगी, तब ये छाया पाखी एक एक कर क्षितिज में उड़ जाएंगी और लौट कर शायद पावस में ही आएंगी। पर जिनके पंख नहीं हैं, लौटने का रास्ता उनका मिट जाता है। एक एक क्षण कांटे सा कंठ में अटक जाता है। हर वर्ष यह वसंत जाने क्यों कुछ और व्यथा ले आता है और असंख्य लोगों के सिरहाने नुचे पंख छोड़ जाता है। दूसरी कविता मैं किसान का बेटा हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, मगर अपने गांव से बहुत दूर जुताई करने की नौकरी मिली है मुझे। कक्षाओं में घूम घूम कर ऐसे पढ़ाता हूं जैसे परती खेत में हल चला रहा हूं। और मैं बोलता नहीं दरअसल, अपनी भाषा के विशाल पैतृक बखार से धीरे धीरे अनाज निकालता हूं। ये देखिए, बीज है मेरे शब्द, अपने जोते हुए खेत में रोज मैं इन्हें बोता हूं। खेत के बारे में सोचे बगैर इस जीवन की मैं कल्पना नहीं कर सकता, और कहता हूं जीवन तो शीत, बारिश और धूप में बैलों के साथ जुटते हुए बड़े भाई मुझे दिखाई पड़ते हैं। जो मेरे पास बैठते हैं वे जानते हैं कि मेरी देह से हमेशा हरी गंध आती है। मेरी सांसों से होकर हरी हवा गुजरती है साए साए, और मेरे शरीर में मेरुदंड की जगह खड़ा है एक छतनार वृक्ष।
मेरी जिह्वा पर नाजुक घास उगी है, मेरी नसों में बहता है हरा रक्त। लोगों का तो यह भी कहना है कि चलता हूं तो मेरे पैरों से हरी आवाज आती है। मैं खाने बैठता हूं तो पीढ़े के चारों ओर पानी उपजते मिल जाते हैं गांव के तमाम लोग। थाली में भात और तरकारी देखते ही धुएं में सींचती मां की भरी आंखें नजर आती हैं। और कौर उठाता हूं तो 1000 किलोमीटर दूर से भी हाल की चमक पिता की आंखों में मुझे परावर्तित होती दिखाई देती है। लेकिन अगले ही क्षण यह चमक उनके धूसर चेहरे की झुर्रियों में कहीं खो जाती है और इस देश में उनकी हालत असंख्य किसानों की निरीहता का मानचित्र बन जाती है और याद दिलाती है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अभी उसका नाम आलू और टमाटर है। ट्रैक्टर पर लदा हुआ वह चावल दाल गेहूं का बोरा है। अभी ट्रॉली में जमा किया कच्चा केला है वह। अभी वह भरना पर लगी हुई जमीन है। अभी वह जेबों में रखी सल्फास की गोलियां हैं। अभी पेड़ से झूलता हुआ शव है वह। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की लाठियों से घायल, सर के फटने से अभी वह खून का छूटता हुआ फव्वारा है। इस फव्वारे को मैंने दूध में बदलते देखा है। इस फव्वारे को मैंने अन्न में ढलते देखा है। इस फव्वारे में मैंने लोहे को पिघलते देखा है। मैं इस फव्वारे का वंशज हूं, इसलिए अपनी कक्षाओं में उपस्थित समय के प्रत्येक संस्करण को जोतना, कोड़ना और बोना सिखाता हूं। और अंतिम कविता जीवनानंद द्वितीय। जीवनानंद दास हम सबके बहुत प्रिय कवि हैं, हमें पता है। तो ये जीवनानंद द्वितीय। मेरे सिवा और कौन जानता है कि तुम्हारे हिस्से न कार्तिक की भोर में ओस से निमज्जित बैजंती फूल की तरह दुर्लभ प्रेमी आया कभी, और न अखंड लालित्य को काव्य भाषा बनाता आया प्रेम। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है कि मेरे हिस्से न विद्युत लता से खिलखिलाती रात आई कभी, न इस मिट्टी के बर्तन को मिला शहद जैसा गाढ़ा और हर श्रृंगार के फूल सा आश्रय। जानता हूं मैं कि न तो नाटोर की रहने वाली तुम ठहरी और न ही मैं जन्मा बोरीसाल में। बीच सड़क पर ट्राम को घर घराते देखना या उसके निकट जाना तो बहुत दूर की बात हुई। रूपसी बांग्ला की सजल भूमि को अभी तक छू नहीं पाया हूं मैं। लेकिन यह जो रोज शाम को मेरे सीने को कुचलता हुआ चला जाता है कुछ, वह ट्राम नहीं तो और क्या है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन झा जी, बहुत सुंदर कविताएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ युवा कवित्री, कार्बी और असमिया भाषा में आप लिखती हैं, ब्यूटी टोकबीपी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं स्थान पाती रही हैं और कार्यक्रमों में आप भागीदारी करती रही हैं। कार्बी भाषा की शिक्षिका के रूप में आप कार्यरत हैं। ब्यूटी टोकबीपी, अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। फिर से म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए उसको। जी आप सुनाइए। नमस्कार, शुभ संध्या
आप सभी के लिए मेरा नाम है ब्यूटी टकबीपी। मैं कार्बी आंगलोंग असम से ही हूँ। सबसे पहले मैं आज इस प्रोग्राम को स्थान देने के लिए सम्मानीय देवेश सर जी को मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे कोई प्रतिष्ठित कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सीखने के लिए मैं आई हूँ। बहुत खुश है आज आप लोगों के सामने ऐसे सीखने को पाया है। मैं एक कविता पाठ करूंगी। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वेलसिंग हंसे सर ने किया है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ अभी। Written in the red blood of the heart. How much pain in a heart will it be enough to write a melancholic poem? Can words paint image? Can the droplets of sorrowful tears drain the heart, storing only love within it? I do not know. Written in the red blood of the heart, dedicated only to you, the love of my heart. यही है। अभी मैं अपनी भाषा कार्बी से सुनाती हूँ। Vibong avike erpen ketok. Ko anak ke oi asing vetong ke sing ve ke oi ahir jir bonda thek jine. Lam thear jan hi thek jine. Ningduk ame kriapum kang hona sing asir kutan pacham unjine. Ne chini ne detlo. Vibong avike erpen ketok. Nang phanpu kapanong vet la neseng akang hon. यही है मेरा कविता। धन्यवाद। धन्यवाद ब्यूटी जी। और मित्रों, अब मैं एक और भाषा, कॉक बोरक त्रिपुरा की भाषा है, उसके युवा कवि, लेखक एवं अनुवादक लिंकन बुरा सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कविता पाठ के लिए। आप बैंक में कार्यरत हैं और आपकी एक कविता पुस्तक प्रकाशित है। लिंकन बुरा सिंह जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। Good evening, everyone. First of all, I'm very happy to participate today's multilingual poet meets. Thank you. I write in Kokborok, the branch of Tibeto-Burman language. So I will read out 3-4 small poems. First one I will read out in my mother tongue, that is Kokborok, followed by translation. And then the rest I will just read out the translation. First I will read out the translation quietly. Slowly, slowly, I shed my skin. Slowly, slowly, I forgot my words. Quietly, I'm lost. Some parts of me resembles you. The rest is someone else. I'm no longer me. Still, my roots can be traced. The mighty river is dead now. Will it ever rain? Once a forest here in these hills is lost, just like me. And those who remain keep counting today, tomorrow, and so on. The roots below the ground scream with anxiety. We may translation. The one now I will read out the original one in my mother tongue, Kokborok. Turuk turuk. Turuk turuk, kibuiru kapuku. Turuk turuk, kogoy tangka kok. Ani kaksa nono sonka. Ei kaksa kubunno. Langkai turika. Tia mari tongku.
Tui rane tui mata buku tui bufuru ba fainai wati oro makha ang haino. Ei je kamaya khu borok lekhai tongo chalcha chalnoi chalburi hatolani yarum chirigai resabo. I'll read out another one. It will be only the translation one. It's a love poem, unfinished. While writing a poem, I fell asleep. After that, I couldn't write at all. While dreaming a dream, it's an unfinished dream. When I was drowned in your love, you left without a trace, and I couldn't love you anymore. And the incomplete love are what make my story. The half-written poem is hidden inside my heart. The unfinished dream is scattered in the sky, and the love that I couldn't give you has turned into moonlight in the darkest of night. I'll read out another one, translation. Stream without a name. I'll just read out the first line in Kokoro. Risha Munkuri, the original name. So, Lincoln, please change your view. Oh, it's okay now? okay, okay. Okay. Stream without a name. Stream without a name. Who knows from where it came and where it will go? Here it is deep to the bottom, and somewhere it is dried up. Stream without a name got so many stories to tell, hidden below the stone and sand. What was she called before? Why is she nameless? Who knows? Up from the hills she came, I heard the villagers say. But where will she go now? Who knows whether she flows or get disappeared in the next village? Do I have still time? Yeah, please read one more. Okay, last one. Translation. It's called How Am I? You ask me, how am I? So I must tell you about my hills, my forest that I have lost. I must tell you about my river. Hello? Okay? So I must tell you about my hills, my forest that I have lost. I must tell about my river that lost its name. My stream dried up and the guiding I have deserted. You ask me, how am I? So I must tell you, my sky is full of stars. Far away behind the hills, someone singing a song of despair, remembering his forbidden love story. My heart is like a stone. It hardly rains for many days. My children fight themselves. My roads are drenched with blood. My god of Rondok is unwell, depressed, just like me. The road of love are all closed, smashed in the middle. From stream to river, all dried up. Only my heart still awaits with hope. Thank you. वाह बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच लिंकन. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मैथिली के प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, आलोचक एवं अनुवादक श्री विद्यानंद झा जी को. आपके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं. भारतीय भाषा परिषद सम्मान, कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं. साहित्य अकादमी की एक
योजना है नए लेखकों की 40 वर्ष पूर्व आयु के लेखकों की पहली पुस्तक प्रकाशित करने की। तो मैं बताऊं कि विद्यानंद झा जी की पहली पुस्तक साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो विद्यानंद झा जी आमंत्रित हैं अपनी मैथिली कविताओं के साथ। नमस्कार। हमरा बजे वाले हमसे साहित्य अकादमी के दिवेश जी के धन्यवाद कहबन। आ विश्व कविता दिवस पर जत कियो लोग सुन रहल छथि जे भविष्य में एकरा सुनता उनका हमर से अभिवादन। हम की करब तो हम पहले अपन कविता मूल पढ़ब तकर बाद अनुवाद पढ़ब। ई हम अहू द्वारा करऽ चाहब जे अहाँ देखबै जे जतेक भाषा हमरा सभक से अइ क्षेत्रक ओ एक हिसाब से हम सब बुझै छियै ओकरा से कह लेल एकटा भाषा के जे ध्वनि होइ छै ओकरो देखबक लेल हमसे पहले मैथिली में पढ़ रहल छी। एकर नाम छै सालक अंतिम सिंगरहार। सिंगरहार फूल ठाम ठाम पाओल जाइ छै, शिवली कहै छै, पारिजात कहै छै, एकटा नाम तो सालक अंतिम सिंगरहार। सालक अंतिम सिंगरहार फूल के देख मुन पड़ल एकटा एहन श्वेत श्याम उक सिनेमा का अभिनेत्री जकर मृत्यु हमर जन्म से पहले भ गेल छलैक। जे देखायल छल पहिल बेर हमरा एकटा छोट कोनो कस्बाक ढाहैत एकटा हॉलक भोरुका शो में आ उधिया देने छल आधा फाटल पर्दा के अपन मुख हंसी सँ आ जकरा संग कहियो कहियो सपना में पचीसी खेलाइत छी एखनो हम। सालक अंतिम सिंगरहार फूल के देख सुगंध लागल कोनो अनभुआर कवि किछु पातिक जे लिख क ओ कोनो कागज पर अपने भेल छला निराश अपन कवित्व पर आ फेंक देने छलखिन एकटा टूटल खिड़की के बाहर मुचरल ममोड़ल कागजक एकटा गोला में। आ जे माटि पानि बसात में पैच क गलि क चतरल पसरल फुलायल हमर आत्मा में आ एखनो सुवासित करैत अछि हमर मन प्राण के कौखन। सालक अंतिम सिंगरहार फूल के देख गरियाल आंखि हमर धुआं सँ जे बहरायल जखन जरौलहुँ अहाँ ओ चिट्ठी सब जे सहनता रहे अहाँ के जे हम लिखी आ कहियो नहीं लिख भेल हमरा लागल अपन घूर धुआं में। कृष्ण जी थोड़ा उसको आप अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज। सालक अंतिम सिंगरहार फूल के देख गरियाल आंखि हमर धुआं सँ जे बहरायल जखन जरौलहुँ अहाँ ओ चिट्ठी सब जे सहनता रहे अहाँ के जे हम लिखी आ कहियो नहीं लिख भेल हमरा लागल अपन घूर धुआं में। हमर सोनित से लिखल ओ चिट्ठीक आखरक मोइस लाल से कारी होइत अछि आ नुराइत अछि आंखि हमर। अगला साल जखन फुलायत सिंगरहार खोलब जखन हम एकटा बन्न साल भरि सँ बोयाम एतै कि ओहिमे गंध कोनो मरनैक सुखायल से मारक ई हल्को सन सुवास हमरा सभक संगक तखनो बहरायत ओहिसँ। I'll read a translation. There are not too many translators in Maithili, and I don't like the idea of translating my own poems. But anyway, this should not be considered as a translation. This is so that more people understand this. Last Parijat of the year. Seeing the last Parijat flowers of the year, I remembered an actress of black and white silent movies who had passed on before my birth, whom I had seen for the first time in the morning show of a crumbling hall of a small town, and who had made the half-tone screen flutter with her silent laughter, and with whom I play pachisi even now in my dreams sometimes. Seeing the last Parijat flowers of the year, I had a faint smell of some lines of an unknown poet, the lines after writing which the poet had become desolate with her own poethood and had thrown out from a broken window in a ball of crumpled paper. That crumpled ball rotted, became one with the earth in the soil, in the air, and in the water, and grew inside my soul flowering, and even now makes my soul fragrant sometimes. Seeing the last Parijat of the year, my eyes smarted with the smoke that came out when you burned those letters
that you wished I should write to you, and those that I could never write, busy with the humdrum life of mine. The ink of the letters of the letter written in my blood becomes darker, black from red, and my eyes get filled with tears. Next year, when the parijats would flower, when I would open the lid of a jar closed for a year, would it emit the smell of the dried grass of a dead river? Or would it still emit a faint smell of our togetherness? The ई पहिल छलै दोसर कविता छै संग कोनो भाथल इनार में गुंगियाइत अछि एकटा वैष्णविक सहजिया गीत मिज्झर भेल नहुए से लेल गेल अहाँक नाम संग मिज्झर भेल आवेग में कलकल बहैत धारक आवाज संग घुरियाइत अछि गीत के एकटा उताहुल बहरेबाक लेल हमरा सभक आत्मा सँ छुबाक लेल आकाशक विस्तार गुंगियाइत अछि ध्वनि गुंगियाइत अछि शब्द कोनो भाथल इनार में कोनो पोखरिक महार पर एकटा झड़ैत पात वाला गाछ तर बन एकटा पुरान बाकस में राखल छै कैक बर्ख सँ दावल तह लागल कैकटा आलिंगन चुम्मा कैकटा स्पर्श हमर चाम पर अहाँक चामक स्फुरण रोमांच आवेग कैकटा हताशा सबटा तहिया के राखल छै कोनो फेकल बाकस में जे बिझा रहल अछि नहुए नहुए भऽ रहल अछि एक माटि सँ पृथ्वी सँ नहुए नहुए रस्ता कैकटा अनभुआर नगरक उजड़ल गामक रस्ता कैकटा प्रतीक्षा में अछि भांगल जयबाक पैर सँ अहाँक हमर पैर सँ दृश्य कैकटा अद्भुत अजबुत कैकटा करुण कैकटा विभत्स सेहो किछु प्रतीक्षा में अछि हमरा सभक आँखिक हेरायल एहि पृथ्वीक कोनो अनजान कोन में कोनो सुन्न मसान हेरायल गाम कि कोनो अनभुआर नगर में की हैब हमर हैब अहाँक आकि अनिच्चक रास्ता में हैब हम हैब अहाँ फराक फराक एकसर एकसर कि हेबे नहीं करब हम हेबे नहीं करब अहाँ The attempted translation goes togetherness. A filled-in disused well reverberates with the mumbled Sahajiya song of a Vaishnavi, mixed with your name whispered softly, mixed with the sound of a thundering river flowing in full spate. So many eager songs swirl, straining to come out of our souls. To touch the heights of the sky, sounds are mumbled, words are mumbled in a filled, disused well. On the banks of a water tank, under a tree with leaves falling, in a locked old box, are kept for many years so many embraces, kisses so many, pressed and folded for many years. The touch of your skin on mine, quivering, exciting, impulses so many disappointments. Everything is folded and kept inside. A box thrown away that is rusting slowly is becoming one with the earth slowly. Routes to many cities utterly unknown, paths to many villages deserted, are waiting for being measured by your feet, by my feet. Many fabulous scenes, strange scenes many, sad scenes many, grotesque scenes many, are awaiting our eyes, lost in an unknown corner of this earth, in a deathly silent lost village, or in an utterly unknown strange city. Would my being be the being of yours? Or maybe on the path of anicca, I would be separately alone. Or is that I wouldn't be, you wouldn't be? अंतिम एक छोट सन कविता पढ़ै छी ई आहू के बुझाइए जाते एकर की संदर्भ छै एकर नाम छले हेरेबाक ऋतु टुह टुह लाल गुलमोहर पियर दपदप अमलतास मोन भरछावा वाला सुगंध नेने भालसिरी फुला रहल अछि जखन एहि पृथ्वी पर ओ सब जिनका धमनी में बहैत छलनि दुनिया सावनक पहाड़ी धार सँ ओ सब
जे रहला सत्पुरुष सन्नारी नेम टेमक पालन करैत बनैत सन नागरिक ओ सब जे देखैत रहैत छलाह सुख के लीलसा से होइत जाइत कोनो सोहनगर नमछुरुक नाह सन धीरे धीरे हेरा रहल छथि. The translation would go, the season of losses. Blooming red gulmohar, splendid ornate amaltas, bhalsiri with an enchanting smell, when all these are flowering on this earth. All those in whose veins the world was flowing like a hill stream. Those who remained as good men and women, following all the rules and regulations, becoming good citizens. Those who kept looking at happiness with a great yearning, like a bewitching long boat going away, far away, are slowly getting lost. Thank you. धन्यवाद अपने सभा. नमस्कार. वाह, बहुत बढ़िया. बहुत बहुत धन्यवाद विद्यानंद झा जी. और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मणिपुरी की प्रतिष्ठित कवयित्री, कथा लेखिका और बाल साहित्यकार क्षेत्री मयूम सुबदनी जी को. आप फिल्मों के लिए भी पटकथाएं लिखती हैं. आपकी कुल 15 पुस्तकें प्रकाशित हैं. 3 फीचर फिल्मों तथा 7 लघु फिल्मों के लिए आपने पटकथाएं लिखी हैं. रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है. आप मणिपुर सरकार में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. क्षेत्री मयूम सुबदनी जी. धन्यवाद. Good evening, friends. At the outset, I think my gratitude goes to Devendra Kumar Deves, Regional Secretary, Sahitya Academy, for inviting me to participate in the Multilingual Poets Meet on the occasion of World Poetry Day. And I also thank to my friend, team, Kiran Kumar Singh, former convener, Sahitya Academy, for telling me to participate in the Poets Meet. In this auspicious World Poetry Day, I will first read my poem in my mother tongue, Manipuri language. The title of the poem, Bom Amasung Lay. Aina piki, aigi punam, nangna loki, apam punam, aduga, matung tabadadi, thazavana magdharak, minung sigi pi piraga, yon thoklami ay. Thirakibani nangbu, aina, maru hunkibana, tamuida. Unabada wakatki, olum tharaduna, li kiwari, maisa langaba, tamoigi maisa, punam mutnam. Nangna loki, achetwa pire, nangi thazavada, piki punshi, aduga. Aduga nangi minumsi patradi, hainakrava sadong irami, aduna. Aduna punamak nganghi nangna, makak katpada, ay tongsa punamak. Haujiti kundog laba makak sinduna, salak layoina, bongi matakta. Now I will read out the poem in English version. Bomb and flower. I gave everything of my own self. You took all your choice with cheer, then followed trembling down of my trust. The moment I bestowed every drop of tears of my life, I was merchandise in trade. I was bound to search for you, lingering the passion in my heart. I found you and relaxed, free from the burden of complaint of my heart. I told the sad story of my dim life to get rid of my poison sorrows. You stood firmly as you
decided. I lost no trust and sacrificed my life. But the image of your love converted to the hungry like the beast. Then you swallowed piece by piece. You swallowed piece by piece, cutting the parts of my whole body. Now, all those cutting parts abandoned, converted to the blooming flowers, openly blossom upon the bough. This is my first poem, and the second poem is Let Me Become Rich. For a long time, I was living a poor life. It's been so long that I am poor. I have done whatever I wish to do, and even had done what I should have done. Have bought vehicle to us, have constructed a house to live, and have sent my children to study abroad, accumulated as such well as I could, and have already got what I desired to have, standing along the border of endless desire. I could not count the moments of joy and happiness. My colleagues, family, relatives, friends, this is what life is. Playfully, I was shipping with life, and the play with life unendingly, unquenchable and endlessly, unnoticeable when life moved forward, like the rotation of the sun and moon. The endless desire, limitless desire to accumulate, thinking that this is life. All these long have gone unquenchable, but the journey of the sun never ends. The journey of the flowers too, the journey of nature never stops. So does the journey of life. The moment upon realization of life, life is full with burden. Only an inch of life has left upon realization of what life is all about. Now, when I long to seek the opportunity, accumulating wealth for myself, the universe has gone afar from me. The moment of life had lost, the wealth are no longer mine. The land no longer belongs to me. My children, my husband, my relatives, my friends, all are not related to me. I am no longer related to anybody. There is nothing left that can give company along the journey of life. The more the wealth and bundle of life I have, the more I become the poorest. In this part of life, what should I have to carry? I did not collect any wealth to step over this path. I have become the poor fellow. Nothing is left when I look back. I did not save anything. When the journey of life is getting late, I have changed my mind. The flame of repentance is blazed. Only just now I have that thought of accumulating the true wealth of life and let me become a rich person. And now uh, the third two poems is very short. The name of the poem, Bhelu. The Bhelu of life has become a void, hollow and empty. What while when alive? Honor that was conferred
in unison. Recognition, fame, prestige, and today among the plastic garbage side, along the side of cross over the river bank, standing in queue. And this is the last one, the old house. With a broken heart, I was lamenting when the old house had gone. It carried away my life and tears, and all the love along with it. The new house with decorations have been raising its story day by day. I was panicked with insomnia when the building raises its story like a nightmare, I suppose. Thank you. Thank you. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सुभद्री जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नेपाली के प्रतिष्ठित कवि, गीतकार एवं गायक कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी को। आपके 8 संग्रह प्रकाशित हैं, आप असमिया में भी लिखते हैं और आपके कई वीडियो एल्बम भी बने हैं। श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी। कृष्ण प्रसाद जी, आप पहले अनम्यूट कीजिए। कृष्ण प्रसाद जी कीजिए, म्यूट कीजिए। अब सुनाइए, आप सुनाइए जी। नमस्कार। वर्ल्ड पोएट्री डे के सभी मेरे साथियों को मैंने नमस्कार किया और साथ एकेडमी के सब मेंबर को हार्दिक नमस्कार। मेरा पोएट्री का टाइटल है भिखारी। भिखारी, मलाई माया लाग्छ ती भिखारीहरूको जसले अर्काको घर घरमा डुलेर एक मुठी भिक्षा खोज्दै ढोका ढोकामा कुरेर कतै आफ्नो जीवनलाई गुजारेको, बिचरा जीवन धान्न कति साह्रो परेको। प्रत्येक बिहानको झुल्के घाममा लौरो टेकेर लम्कन्छन्, हातमा झोला त छँदैछ, 2 हात पसारछन् माग्दै खान पाइन भन्दछन्। त्यसैले मलाई माया लाग्छ ती भिखारीहरूको भिक्षा खोजेर हिँड्दै कतै आफ्नो जीवनलाई गुजारेको। मुझे तो कोई ट्रांसलेट का बात किया नहीं था, लेकिन भी थोड़ा मैं इतना मुझे ज्ञान है उतना मैं बोल दूंगा। भिक्षारी जो बेगार है, उन्होंने ऐसे औरों के घर में जाके भिक्षा मांग के उन लोग ने अपना जीवन को गुजारा किया है। एक पोएम का ट्रांसलेट ऐसे मैंने शॉर्ट में बोल दिया है बस। और मेरा एक नेक्स्ट पोएट है नेपाली में, टाइटल कति बस्ने कैदी भई। कति बस्ने कैदी भई, भारतीका काखमा हलक्क हुर्केका हे मेरा नेपाली दाजुभाइ, दुःख पाए हाम्रा सजातीले कति बस्ने कैदी भई। घाँस खोसियो, घरबास लुटियो, लुटियो हाम्रो सबै, चिन्ताका सागरमा डुब्दैछौँ हामी, कति बस्ने कैदी भई। चोट भर्दै नेपालीका सन्तानमा ढोकामा राक्षस सबै, चोट भर्दै नेपालीका सन्तानमा ढोकामा राक्षस सबै, चिन्ताका सागरमा डुब्दैछौँ हामी, कति बस्ने कैदी भई। चोट भर्दै नेपालीका सन्तानमा ढोकामा राक्षस सबै, चिन्ताका सागरमा डुब्दैछौँ हामी, कति बस्ने कैदी भई। ग्लानीमा छटपटाउँदै छातीमा पीर सधैँ, गहिरो चोट सहेर सजाती, कति बस्ने कैदी भई। ये जो नेपाली गोरखा लोगों के लिए वो जो एक ट्रैवल समस्या था, वही समस्या के लिए, समस्या के बारे में लिखा हूँ। वो जो अतीत में भी था, अभी भी गोरखा नेपाली लोगों ने ऐसे समस्या झेल रहा है। वो ये मेरा कविता का सारांश या ट्रांसलेट। दो था, कंप्लीट किया, दो ही था मेरा, ओनली फॉर 2 कविता पोएट्री था। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी को। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ओडिया की कवयित्री माधुरी पंडा जी को। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से आपकी रचनाएं प्रकाशित प्रसारित होती रहती हैं और 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं, अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है।
श्रीमती माधुरी पंडा जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार सर, ओडिशार माधुरी पंडा। समस्त को विश्व कविता दिवस अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँ। आज प्रथम मु हिंदी रे कविता पढ़ी, तापर मु ओरिजिनल ओडिया रे पढ़ी। प्रथम हिंदी कविता सर। कविता, तुम्हारी कविता जैसी, मेरा ये जीना तुम्हारी कविता जैसा ही है। जिंदगी भर खींची चली जा रही हूँ आग की दरिया में। हड्डी, मांस, लहू कब ठक ठक उबलने लगे ख्याल ही नहीं रहा। सवाल तो हजार है, पर कोई भी जवाब क्या तुम्हें पसंद भी आएगा, ये सोचकर मैं चुप रही। सड़क किनारे का पत्थर, आग में घुस चुके पांव, कटने के लिए तैयार गर्दन, दुष्कर्म पीड़िता की सुनी आंखें, ये सब तुम्हें कैसा लगता? ये सब तुम्हें कैसा लगता? कैसा लगता सारी जिंदगी जलते ही रहना? क्या कुछ नहीं दिखाती तुम्हारी कविता? क्या कुछ नहीं दिखाती तुम्हारी कविता? सिर्फ पीड़ा, छटपटाहट और मुट्ठी भर व्याकुलता। धन्यवाद। अभी मैं ओडिया में पढ़ूंगी। कविता, तुम कविता भली, तुम कविता भली तो मो बंचिबा, तुम कविता भली तो मो बंचिबा। घोसारी हे गली निया भीतर को सारा जीवन। केबे पत्थर, केबे पानी, केबे रक्त मजा सबू टक टक फुटिले किछि भी जाने नहीं। हजार हजार प्रश्न जे को उत्तर तुमको ठीक लागिवनी जाने चुप हेली। रास्ता कड़र पत्थर, निया भीतर को पशि जाउथिबा पाद, हाण मुह को देखौथिबा बेक, धर्षितार रक्त शून्य आखि, एमाने तुमको केमिति लागंती? केमिति लागे सारा जीवन जली जली जीवा? केते कौन न देखाए तुम कविता, केते कौन न देखाए तुम कविता, खाली छटपट आउ छटपट मुठाई व्याकुलता। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी जी। और मित्रों, अब मैं इस आयोजन में आमंत्रित अंतिम कवि श्री अर्जुन चरण हेम्ब्रम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कविता पाठ के लिए। आप संताली के प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, आलोचक एवं अनुवादक हैं। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है। श्री अर्जुन चरण हेम्ब्रम जी, पहले अनम्यूट कर लीजिए सर। जी अब हेलो पढ़िए। हेलो, जी पढ़िए। सुनाई देता? जी गुड जी। इवनिंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू पार्टिसिपेट in the World Poetry Day. I will be reading 2 poems if possible in both in Santhali and translation. Otherwise, I read only Santhali. Dahani Odson Gada Osar Danda Dhipre Dahani Doko Julu Dhakav Dhakav Hopon Babudo Akal Sakal हरगिब हॉस्पिटल रे भेजा बोंगा बाकोटारहा खाबड़ चे दरुड़ते हास्पाताल को ढाका बोलन झंटी गुगु गुगु भरिया कते खंची खंची पीड़ा सिंगर ते को
uskur pide calon teko salgaw hurum hurum angra chailom tul kate julu darang darang elang pasna gurla gurli dhiri dare kharu disom holko botor kana pache dara kana marang ajar. I am reading out English translation. The witches. Witches are dancing on the wide bank of Hudson, holding burning candles between red leaves. The evil spirit on deputation infiltrate through the barbed fence, retaliate with vengeance if stoned, sneak into the hospital campus through the drainage of tunnel, carrying basket full of curses. The evil flame of potable furnace agitate with blacksmith furnace, radiate invisible rays, intercept and strangulate veins of toys and puppets. Second poem, this is Salflowers. Sorgi Fool. I am neither here nor here. I am everywhere, vegetating here in the dumping yard, depressed and downtrodden. Here I am, jumping and singing nursery rhymes of Vedic masterpiece in ditches full of puddle water. Here in the Dharavi, I am waiting for hanging roots of sal tree in blossom to pluck petal of fragrant flowers. Santali, Sarjam Baha. Hande ho banu inya, nonde ho banu inya, minen gya indo gotapala, jande tande, sopo rodo, posra nislo, bidko, talga tua, indo levet landho. Hirka hisa, soboj soboj, rehet jivi, dare dogoj, rodoj tedo, bang sita a, sosoria sosoj. Bokol bokol, bodeda, new puti kate, dombol dombolin, chape balai, inma akar cooker, gada aleko, phelao kidinya, ola khon laga, sarjam buterin, umulakana, dare chotte dejo, midbar thope, sarjam baha pete. Thank you. I have finished both my poems and only two I have. बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन चरण हेम्ब्रम जी को। मित्रों, यह एक बहुत ही सुखद कविता की शाम रही। आप सभी जानते हैं कि विश्व कविता दिवस तो बस एक
इस तरह का एक शुरू कर दिया गया है कि विश्व कविता दिवस मनाया जाए, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है जन्म लेने के साथ ही और प्रत्येक दिन बिना कविता के तो कम से कम भारतीय मन जो है, भारतीय मनुष्य जो है वो तो नहीं रह पाते हैं। दिन भर में आप खुद ही जो है कविता को जो है कई सारी कविता पंक्तियां दोहराते हैं, कविताएं सुनते हैं, गीत के माध्यम से सुनते हैं या ऐसे भी पढ़ना चाहते हैं। कोई वक्तव्य ही देते हैं तो चाहते हैं कि वक्तव्य में कोई कविता पंक्ति सुनाई जाए ताकि वक्तव्य जो है हमारा बहुत प्रभावी हो जाए। तो इस तरह की प्रभावी उपस्थिति हमारे जीवन में कविता की लगातार बनी हुई है और जन्म लेने के पहले से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तक जो है कविता के रूप में हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। संवेदनाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने को संबलित महसूस करते हैं, अपने को संबल प्रदान करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। मैं आप सभी को विश्व कविता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ ही अकादमी की तरफ से सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और एक बहुत ही अच्छी कविता की शाम हम लोग अपने साहित्य प्रेमियों को के लिए उपस्थित कर पाए। यह पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब के चैनल पर, साहित्य अकेडमी के चैनल पर उपलब्ध है। अनुरोध होगा सभी दर्शकों से, श्रोताओं से, आप सब से भी कि उस लिंक को जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।